themselves to earn a living. Kindly drop the messages in the chat box. Okay, good afternoon, all. Okay, so there are three vital processes of an economy. जिन पे इकोनॉमी बेस्ड है एसेंशियल वाइटल्स आर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? इन्वेस्टमेंट क्या है? किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, बी इट अ गुड और अ सर्विस, राइट? पैसा कहीं तो लगाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, right? So investment is mandatory. Now, when the investment has been done, what will do? Production will take place. Production is mandatory. Ma'am, can you once please repeat the meaning of economic? Economics का क्या मतलब होता है? Economics is a system. एक सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज, नेसेसरी रिसोर्सेज जो उनको काम करने के लिए चाहिए, so that they can support themselves or they can earn their living for their livelihood. There are three vital processes of an economy: investment, production and consumption. Investment is necessary for production. कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए आप कुछ पैसा कहीं तो लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, बी द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वट एवर इट इज. अब जब चीज़ें प्रोड्यूस होंगी तो कंज्यूम भी तो होंगी, बी द गुड और अ सर्विस. एवरीथिंग इज देयर. आज के टाइम पे तो रेवोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई, यू हैव एवरीथिंग ऑन योर फोन. करा, घर पे चीज़ें आ गई, सर्विस तो हो रही है, पर प्रोडक्शन तो कहीं ना कहीं हो रही है उस गुड की. Right? So when we talk can you make your presentation more? बच्चा प्लीज़ आपकी क्वेरीज लास्ट में हम लोग हैंडल करें, लास्ट 5 मिनट्स में, क्योंकि ऐसे अगर एक एक चीज़ सबकी करेंगे तो क्लास ही नहीं आगे बढ़ पाएगी. ठीक है? थैंक यू. So basically when we talk about economics, it is a study of scarcity and how it affects our resources. Scarcity का मतलब होता है कमी. प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? व्हेन वी हैव अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, बिकॉज हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारी वांट्स अनलिमिटेड है. साइकिल है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, अगर मारुति है तो होंडा सिटी चाहिए, होंडा आ गई तो क्रेटा चाहिए, क्रेटा है तो मर्सिडीज चाहिए, एक मर्सिडीज है तो 2 मर्सिडीज चाहिए. ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म होती है? नहीं होती है. दे आर इनफाइनाइट. एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ चाहिए. और प्रॉब्लम क्या आती है? वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. दे आर लिमिटेड इन नेचर. Then the problem of scarcity arises. And how this problem of scarcity affects the resources and how these commodities and services are produced. Production कैसे होती है? Welfare increase over होती है, right? So this is economics. It is a study of scarcity. अब हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज आ जाती है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. When we talk about economic activity refers to the production, distribution, consumption of goods and services, made for earning. कमाने के लिए जो एक्टिविटी हम लोग अंडरटेक करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. And non-economic activities are those activities which are undertaken out of love, out of affection. Simple example, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. I am a professor at the university, right? So I am being paid आप लोगों को पढ़ाने के लिए. दिस इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर अब यही सब्जेक्ट मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी तो क्या वो मुझे पैसे देगा? मैं उससे पैसे लूँगी? नहीं. तो दिस इज टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जिस इन सिंपलर टर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको पैसे मिलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको पैसे नहीं मिलते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. क्लियर? आगे समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, great. Yes, ma'am. Okay. So to conclude, great. To conclude, we can say that economic activities and non-economic activities, they differ in a number of ways, including the creation and use of resources, aim of the activity, and the involvement of profit. Now comes the scarcity, यानी कि कमी. Okay. ना कमी किस चीज़ की होती है? बहुत सारी चीज़ों की वजह से होती है. बिकॉज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, इनफाइनाइट है, और रिसोर्सेज क्या है? कम है, लिमिटेड है. बीट ह्यूमन रिसोर्सेज, बीट नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज हो जाए या नेचुरल रिसोर्सेज जो है, दे आर लिमिटेड इन नेचर. और प्रॉब्लम कहाँ आती है? हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दीज रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पॉसिबल वे. बिकॉज हर रिसोर्स के अलग अलग यूजेस पे, right? So scarcity, the problem of scarcity arises when there is a limitation of supply in relation to the demand for that commodity. Okay. Scarcity is not only limited to the natural resources,
also to the human resources, labor, skills, machines, technology. Okay, there's several reasons why scarcity is a problem. Why? First is that it means that people have to make choices about how to allocate the resources. बहुत मुश्किल है कि चूज करना कि रिसोर्सेज को कहाँ पे एलोकेट किया जाए. ओके, as there are often multiple demands for those resources. Second is it can lead to competition for resources. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पीपल क्या करेंगे, compete करेंगे कि पहले मुझे चाहिए, मैं एक्सेस ले लूँ इस चीज़ का, पहले पहले मेरे पास आ जाए. So what it will do, it will give a rise to the tension, to the conflict among the people, among the communities, even among the countries. Yes. Next is it can lead to inefficiencies in the allocation of resources. How? Because resources limited है, scarce है, और लोगों को ये भी नहीं पता कि how to use them in the best possible way. Right? Okay. So fourth is scarcity can lead to inequality. Now how of those people, those of excess, if we take the example in urban areas, right, or we are sitting in a city over here, we have much more access to resources, to education, to healthcare, as compared to those living in the remote rural areas. जो दूर, बहुत दूर के एरियाज में रहते हैं, कहीं एरियाज में तो अभी तक शायद इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची है इंडिया के, जो बहुत दूर दराज के हैं. तो क्या होता है, इससे क्या होता है, कमी की वजह से क्या आता है, इट कैन लीड टू इनइक्वालिटी, कि किसी को ज़्यादा मिल रही है चीज़ें, किसी को कम मिल रही है. स्कैसिटी कैन ऑल्सो लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. तो पीपल क्या, लोग क्या करेंगे, दे कैन यूज़ अनसस्टेनेबल वेज, डिफॉरेस्टेशन करेंगे. इफ़ वी गो टूवर्ड्स द हिल स्टेशन, हम लोग, आई हैव बीन टू, राइट, एंड व्हाट आई सॉ, आई वोंट नेम दैट हिल स्टेशन, राइट, बट वहाँ पे बहुत एक टर्न के बाद जेसीबी मशीन लगी हुई थी, डिफॉरेस्टेशन होनी थी टू बिल्ड द होटल, राइट. सो ये क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही, इट विल इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट. यस, फ्लडिंग तभी आती है इतनी ज़्यादा. सो वी शुडंट यूज द अनसस्टेनेबल वेज. Now, to address the problem of scarcity, economists have developed a number of different approaches. First of all, increase the supply of resources. Technological innovations karke, they can increase the productivity. Another approach is to reduce the demand for resources. Education, awareness, campaigns लगा के कि conserve electricity, conserve water, save water. ऐसे campaigns को बता के कि reduce करो demand को. Don't waste them. Don't use haphazardly. Right? Next is to improve the efficiency of resources. This can be done by using the resources in the best possible way, man. Clear? So we have discussed about the introduction to the managerial economics and what economics is. Hello dear learners, I am Dr. Shushmita Goswami. Today, I am going to introduce you to a realms of a new subject, that is managerial economics. So dear learners, at the end of this session, you would be able to define managerial economics and understand the basic definitions of the subject of the managerial economics. So dear learners, you could see here a picture. You must be imagining whose picture is it. This is the picture of Professor Ragnar Frisch, who coined the term managerial economics for the first time in the year 1933. So, this subject, managerial economics, basically studies the individual units like the individual households, pricing of a product, wages of the workers, and so on. So, managerial economics covers those activities of the mankind which are concerned with the earning and spending of money. For successful handling of these activities, there should be certain laws and rules which are formulated, and these laws and rules are known as the various theories of economics. So, using these rules and tools provided for analyzing the different business conditions, scenarios and problems and applying them successfully to arrive at several economic decisions, the discipline of managerial economics comes into play. So,